was made by scooping out a hemisphere from each end of solid cylinder as shown in figure. If the height of the cylinder is 10 centimeter and its radius is 3 centimeter, find the total surface area of the article. What is the meaning of this sentence? The meaning of this sentence is, there is a cylinder, wooden cylinder of 10 centimeter height. From it I am removing, scooping out. Scooping out means what? इस तरह से निकालना. So यहाँ से भी हमने ऊपर से भी हेमिस्फीयर निकाला है, नीचे से भी हेमिस्फीयर हम ऊपर से और नीचे से हेमिस्फीयर निकाल रहे हैं. तो आपको ये पूछा है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ द वुडन आर्टिकल कितना होगा. वन थिंग यू शुड नॉट फॉरगेट इज, कीप इट इन माइंड, अंडरलाइन इट. when you are scooping out the things and you are asked to find out the surface area, at that time total surface area of the cylinder plus total surface area of the two hemispheres will be there. You have to add the surface areas. Remember, when surface area जब निकाल रहे हो और स्कूपिंग आउट किया जा रहा है, क्योंकि इसको स्कूप आउट करने के बाद ये हेमिस्फेरिकल गड्ढा यहाँ पर भी होगा और हेमिस्फेरिकल गड्ढा, दैट होल विल बी लेफ्ट आउट इन दिस. सो सिलेंडर का कर्ड सरफेस एरिया प्लस टू हेमिस्फीयर का कर्ड सरफेस एरिया विल बी द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल्स. 10 में से 9 बच्चे ये गलती करते हैं. वो क्या करते हैं पता है क्या? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ टू हेमिस्फीयर करते हैं. बच्चों, वी आर नॉट फाइंडिंग द वॉल्यूम हियर, वी आर फाइंडिंग द total surface area. And if you want to find the total surface area, for God's sake, don't subtract it, add it. So what is my first sentence is, my first sentence that I would like to write here is, total surface area of the article, total surface area of the article is equal to, total surface area of that article is equal to curved surface area of the cylinder, curved surface area of the cylinder plus 2 multiplied by curved surface area of hemisphere. Hemisphere, this is very 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 important sentence. बहुत ज़रूरी है कि सिलेंडर का कर्ड सरफेस एरिया प्लस इस हेमिस्फीयर का कर्ड सरफेस एरिया दोनों का, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? द कर्ड सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल. नाउ हियर कर्ड सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल सिलेंडर इज 2 pi r h. It is 2 pi r h. And curved surface area of hemisphere, see, curved surface area of hemisphere, complete sphere is, it will be equal to the radius of 4 circles, area of the 4 circles. इसलिए अगर हेमिस्फीयर है बच्चों तो एक हेमिस्फीयर का होगा 2 pi r square, यानी एक हेमिस्फीयर का 2 pi r square. Since there are 2 hemispheres, this is 2 into 2 pi r square. So this if you simplify, it becomes 2 pi r h plus 2 multiplied by 2 is 4. So 4 pi r square. Now one more thing that you should not forget is, radius of the cylinder and radius of the hemisphere are same. So you can keep a common symbol for both. Don't keep different symbols. इसका रेडियस और इसका रेडियस दोनों का सेम है. ये रेडियस भी 3.5 है हेमिस्फीयर का और सिलेंडर का भी सेम है. नाउ इफ यू अगेन फर्दर सिंप्लीफाई, दिस विल बी इक्वल टू 2 pi r कॉमन है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर pi इज कॉमन हियर, r is common. So what remains in the bracket is h plus 2r, h plus 2r, h plus 2r. Now you see the radius is 3.5 and the golden rule I have told you, whenever radius is given to you, you have to convert that 3.5 into 7 by 2. So the radius given to you is 3.5 and that if I convert it children, it will be equal to 7 by 2 centimeters. Height of course is given to you, that is equal to 10. So height is known to us, radius is known to us. Let us put these values here and get the answer. So what is that I am going to get here? So 2 multiplied by 22 by 7 multiplied by 7 by 2 multiplied by height is 10 plus 2 multiplied by 7 by 2. Okay. So this will be equal to 2 multiplied by 22 by 7 multiplied by 7 by 2. This 2 cancels here. So it becomes 10 plus 7.
So it becomes how much? 10 plus 7 is 17. So this if you simplify, just see here, 7 ones are 7, 7 ones are 7. Very simple. 2 ones are 2, 2 ones are 2. So what remains here is 22 multiplied by 17. And if you multiply this, 17 twos are 34, carry 3. 17 twos are 34 plus 3 is 374 square centimeters. 374 square centimeter. So simple, isn't it? Very simple. क्या करना है यहाँ पर? Most important thing is don't forget. I am repeatedly telling you. सिलेंडर का कर्ड सरफेस एरिया में दोनों हेमिस्फीयर का कर्ड सरफेस एरिया को प्लस करना है. तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल इज इक्वल टू कर्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर प्लस 2 इंटू कर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर. तो 2 पाई आर अगर मैं कॉमन ले लूँ तो h प्लस 2r है. तो बाद में इसकी सारी वैल्यूज आप डाल दीजिए तो आपको मिल रहा है कर्ड सरफेस एरिया, टोटल कर्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस आर्टिकल इज इक्वल टू 374. डोंट फॉरगेट टू, let me repeat many times, even if you are tired also, I am not tired to tell you that don't subtract it, add it. Curved surface area of the cylinder plus 2 times curved surface area of the hemisphere, and everything if you simplify you are going to get 374 square centimeter as the curved surface area of this article. That's all.